दोस्तों, हिंदू खतरे में है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? तो चलिए मैं आपको लेबनान की कहानी का उपयोग करके बताऊंगा और तब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हिंदू खतरे में है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1970 के दशक के दौरान लेबनान को अरब का स्वर्ग कहा जाता था और इसकी राजधानी बेरूत को अरब का पेरिस कहा जाता था। लेबनान भी भारत की तरह एक प्रगतिशील, सहिष्णु और बहुसांस्कृतिक समाज था। लेबनान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय थे। यहाँ अरब के कई बच्चे अध्ययन करने के लिए आते थे। लेबनानी बैंकिंग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग प्रणालियों में से एक थी। लेबनान एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी थी। दोस्तों, 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग भी लेबनान में हुई थी। आप फिल्म को देखकर आप सोच सकते हैं कि लेबनान कितना अच्छा था। जब 1970 के दशक में जॉर्डन में अशांति थी, तब लेबनान ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोले, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ बदल गया। 1980 आते आते लेबनान आज के सीरिया की तरह बन गया। लेबनान की ईसाई आबादी जिहादियों द्वारा मार दी गई, जो शरणार्थी के रूप में लेबनान में घुसे थे। पूरी तरह ईसाई आबादी मार दी गई, उन्हें किसी ने नहीं बचाया। ठीक उसी तरह जैसे कोई कश्मीरी पंडितों को बचाने नहीं आया। मध्य पूर्व में ईसाई बहुमत वाला लेबनान एकमात्र देश था। लेबनान की कहानी केवल 25-30 साल पुरानी है। ये छोटा सा वीडियो लेबनान के नागरिकों की दुर्दशा बताता है। I come from Lebanon. I was born and raised in Lebanon, which used to be the only majority Christian country in the Middle East. We were open-minded, we were fair, we were tolerant, we were multicultural. We prided ourselves in our multiculturalism. We had open border policy. We welcomed everyone to come to our country because we wanted to share with them the westernization which we had created in the heart of the Arabic world. Muslims used to send their children to study in our universities because we had built the best universities in the Arabic world. They graduated and worked in our economy because we had built the best economy in the Middle East, even though we did not have any oil. Beirut became Paris of the Middle East, the banking capital of the Middle East. In 1965, National Geographic magazine had on its front cover, Lebanon, Eden of the Middle East. Unfortunately, all this began to change as the years went by. See, we got our independence in the early 40s. But by the 60s and 70s, the Christians had become the minority and the Muslims had become the majority in Lebanon. And as the Islamic population grew in the country became less and less tolerant because they started pushing for more rights that were not compatible with our Judeo-Christian value system that we had created. And that's when the problems started. The problem was contained until the influx of the Palestinians out of Jordan in 1970, when Lebanon brought them in because we already had refugee camps. Actually, at that time, Lebanon was the only country in the Middle East to accept the third wave of Palestinians into Lebanon. The majority of them were Muslims. They put their heads together with the Muslims in Lebanon and declared jihad on the Christians. What they wanted to do is create a base from which to fight Israel, kill the Jews, and throw them into the sea. Something they tried to do in Jordan. Yes, Arafat and the Palestinians tried to do in Jordan, but they failed because of the dictatorship of the king. Yet they were able to come to Lebanon, use our open-mindedness, our fairness, our tolerance, our multiculturalism, and our democracy to topple our democracy. My 9/11 happened to me in 1975 when radical Muslims blew up my home, bringing it down, burying me under the rubble wounded as they shouted Allahu Akbar. My only crime was that I was a Christian living in a Christian town. I ended up in a hospital for 2.5 months. And as I laid in a hospital bed, hooked up to IVs in both arms, I would ask my parents, why did they do this to us? Why did they attack us? And my father would tell me, because we are Christians, the Muslims consider us infidels and they want to kill us. So I knew since I was a 10-year-old child that I am wanted dead simply because I was born into the Christian faith and lived in a Christian town. भारत को लेबनानी इतिहास से सीखने की जरूरत है। उन ताकतों के खिलाफ सतर्क होने की जरूरत है जो भारत को आंतरिक रूप से नष्ट करना चाहते हैं। यही कारण है कि एनआरसी भारत के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कई राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए ये होने नहीं देते। फिलहाल मेरी वीडियो में इतना ही। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।